Hello students, lesson number 1 in history, where, when, and how is going on, and today I will tell you about the colonial period. Colonial period, what's the meaning of colonial period? So before knowing about the colonial period, the meaning of colonial must be clear to you. Children, word colonial आप बना है word colony से, ठीक है. अब ये colony क्या चीज़ है? अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ बहुत शॉर्ट में. When the Britishers came in our country, they started capturing the different parts of the country, and after capturing, what they did, they started ruling over the Indians, started exploitation, dominating the Indian people. और जिस स्टेज पे भी वो जिस स्टेज को भी वो कैप्चर करते थे, वो वहाँ पे वो अपना पूरी तरह से एक तरह से अपना हक जमा लेते थे, और दैट वो ही जो होता था वो होता था colonization. The word colonization refers to at the colonial period. Now look, the establishment of British rule and the subsequent exploitation after dominating over the Indians is referred to as the colonial period. मैंने आपको बताया Britishers आते थे, when they came they started capturing the different part of the country, and what they did, they started exploitation and dominating the Indian people, okay, over the Indians, and referred to as the colonial period. होता क्या था चिल्ड्रन, हमारे जो लोकल नवाब्स थे, हमारे दैट टाइम के राजा लोग थे, किंग्स थे, राजा थे, तो व्हेन ब्रिटिशर्स ने उनको आगे एक ऑफर रखा, दे वांट टू इंक्रीज देयर बिजनेस, दे वांटेड टू डू ट्रेड, ओके. और ट्रेड से क्या होता था, ट्रेड से क्या हो सकता था, आवर कंट्री कैन कुड अर्न द वेल्थ. तो उस टाइम के जो राजा थे, किंग्स थे और नवाब्स थे, उनको लगा दिस बिजनेस इज ऑफ फुल ऑफ प्रॉफिट, तो दे गेव द परमिशन टू द ब्रिटिशर्स ओनली टू डू ट्रेड इन आवर कंट्री. बट व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डूइंग दिस, slowly they captured that business completely, and they started ruling over those rajas and nawabs, and which was resulted in the establishment of British Empire in our country. This was a dynamic period also in the world history. अब उसके बाद हुआ क्या था, ट्रेड पे उन्होंने हमारा पूरा कब्जा कर लिया था, and we were starting happening slaves, one by one हम उनका गुलाम होना शुरू हो गए थे. Started from नॉर्थ एंड जब साउथ तक जाते नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिश का स्लेव हो चुका था, एंड दे कैप्चर्ड ऑल ओवर आवर कंट्री, एंड डू यू नो दैट दे रूल्ड ओवर अस कंप्लीट 200 years. We were the slaves, we worked under the British government complete 200 years, and because of the colonization, during this period, events like Russian Revolution, French Revolution, American War of Independence, First World and Second World War took place. क्यों? क्योंकि हम उन्होंने जो हम लोगों के साथ किया था, उससे हम लोग काफ़ी बहुत परेशान हो चुके थे, and we started fighting to get the independence, and which resulted that many events took place like Russian Revolution, French Revolution, American War of Independence, First World War and Second World War. So this is the colonial period. The colonial period क्या था, when the Britishers came to India and started capturing over the particular states, and over the particular state, and make that state as the colony, and this was the colonial period. Children, next topic is sources of information. Official records, literary sources, surveys and census are few of the sources of information of British time. So today we will discuss about the official records. Now look, the British administration methodically recorded every plan, law, policy, treaty and agreement. Whatever they decided to do, they planned each and everything, and
maintain a record of that policy, treaty or the agreement also. They preserved all the documents for this purpose. They set up record rooms. It's a big deal कि वो जो भी करते थे उस चीज़ के रिकॉर्ड को प्रेजर्व करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए एक रिकॉर्ड रूम मेंटेन किया जाता था. सोचिए आज से कितना टाइम पहले. इट प्रूव दैट ब्रिटिशर्स आर वेरी शार्प माइंडेड. म्यूजियम्स एंड आर्चीज वर ऑल्सो सेटअप फॉर दिस पर्पज. अब म्यूजियम्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज अभी भी म्यूजियम्स में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ममीज देखते हैं, या किंग्स और रूलर्स के टाइम के ऐसे जो वेपन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी उनकी ड्रेसेस होती हैं, वेपन्स होते हैं, वो हम देखते हैं म्यूजियम में, जो कि आज से हज़ारों साल पहले यूज़ होती थी और उन्होंने संभाल के उसको म्यूजियम में रखा हुआ था. मतलब वो लोग तो जब चले गए तो उसके बाद जो लोग उस टाइम के बाद रहे होंगे उन्होंने उनको एक म्यूजियम या आर्चिव में सेटअप कर दिया जाके, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं लाइक अस और हमारे भी जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी वो उसको देखकर उस टाइम का अंदाज़ा लगा सके. ओके, were also set up for this purpose, and these official records are invaluable sources of information about the British period. What happened at the time of Britishers, what they decided to do, what policies they applied over Indians, what agreements they finalized. This information we only get this information by the records which were maintained by the Britishers. So these records are the invaluable information of the British time. Okay, now this was the official records, one of the source of information. In next video we will learn about the literary sources, census and surveys. Okay, now today we have discussed about colonial period and one of the sources of information, that is official record. Now read this in your book, watch my video, listen the explanation, and again take a reading in your book. I hope if you do like this, then the explanation will be clear to you. Even then, if you have any doubts, you can call me. I'm always there for you. So we will meet soon in next video with another source of information. Till then, goodbye.